Hi, good morning, everyone. Okay, let's start. Okay, great. Tanisha, मेरा screen दिख रहा है? Yes, sir. Okay, great. Okay, good morning, everyone. Today our subject is हम बात करें और बहुत ही स्पेसिफिकली वील ओनली डिस्कस वेंडर स्क्रिप्ट कि एक वेंडर से अगर हम मिलने जा रहे हैं तो हम उनसे क्या बात करेंगे, राइट? So let's, before getting into that, again I have a AV for you, and once we go through that AV, then we'll continue, right? चलो बच्चे लोग, भागो भागो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नहीं, आज नहीं। समझना, ये ईंटें जो है ना, वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो 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 जल्दी। There is some internet issue. He'll join in 2 minutes. नहीं सर, सर नहीं। कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, उठो। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन। जल्दी Okay, so am I audible? Okay, great. So the learning from this AV is we should learn the process, right? कई बार होता है जब हमें लगता है ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, ये हम खुद कर सकते हैं, टीम शायद उतनी स्किल वाली हमारे पास नहीं आएगी, और वी हैव लॉट ऑफ
what you can say, myth about our teammates. First, we need to trust our teammates. We need to create a process. शायद ईंटें ऐसे उठा उठा के रखने में भी सेम टाइम लगता, सेम सब कुछ लगता, बट इट वुड नॉट हैव बीन स्केलेबल, राइट? आपने देखा वो पहली बार ही इधर से उधर ले जाने में थक गए, आउटपुट सेम है, बट जब उन्होंने प्रोसेस समझा तब वो शायद काम बहुत आसान हो गया. सो मेनी अ टाइम्स वी ऑल्सो फेल टू लर्न द प्रोसेस. सो माई ओनली जिसको बोलते हैं ना, हमारी जो कोशिश है, दैट इज ओनली कि आई कैन मेक यू लर्न द प्रोसेस. द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. When we say that you are a VP, you are an MCP, you are a CP, you are a BDO, it is how you pass that ball. If you think that everything will be done by you, you will never win a match. You might have some success. You might have success for some time, but it is not going to scale. You might be successful in starting, बट वो सक्सेस बहुत ही कहते हैं ना छोटे समय के लिए होगी. आप 100-50 यूपॉस तक बहुत ज्यादा जा सकते हो क्योंकि आप अपना इनर सर्कल कवर कर लोगे. बट इफ यू आर नॉट लर्निंग द प्रोसेस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो विद दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू सबमिट दिस. Please learn the processes. Whatever we are talking, please at least try to implement it once, which is very important for you only. कम काम करके आप ज्यादा स्केल कर पाओगे, ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाओगे. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. ज्यादा काम करके ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? यू हैव टू लेट योर टीम लीड यू. Until you will not let your team lead you, there is no chance that you are going to scale. MCP है तो CP बनाए, CP है तो BDO बनाए, BDO है तो पार्टनर बनाए, and then you do the business. Distribution is very important. I've seen people saying that sir उसका स्किल पता नहीं कैसा होगा, ये कैसा होगा, हम ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं. Please understand, when you came into the system, system was welcoming you. Don't create a system which is not welcoming anyone, right? So with this, let's come back to our main agenda, how to recruit a vendor and what to talk to a vendor. Before we get on to that, just a reminder who you are. You are king of Global Gardener, you are hub of empowerment, and you have to offer opportunity. If that offer is not accepted, you have to create the opportunity. You have to meet any person with the mindset of a giver. Many a times we fail to create a mindset of a giver. We become a beggar type of person. यार प्लीज आप हमारे वेंडर बन जाओ, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, and you keep on, you have to just push an offer. Sir, this is my proposal. If you accept it, we continue. If we don't accept, we remain friends, right? So please remember this dialogue every time when you go out in market, that you are a king of Global Gardener. You are an hub of empowerment because you empower everyone in the society, which is vendor, UPOS, user, anybody you touch, you empower them. And let it be an offer. If they doesn't respond to your offer, please create an opportunity with someone other person, right? And remember this also, you are working with the world's most powerful and most empowering app and website. Now, how to search for a vendor? On that day, I told you how to do the prospecting. Now, let's say you have done the prospecting from all these things, right? You just can take your bike or car and just roam around in your territory. Just see who is doing advertisement, who is distributing pamphlets in newspaper, who is doing hoardings, who is advertising in Just Dial, who is doing India Mart. You now know that they need business, right? They need business. It is very simple. You can conclude with any brand strategy that brand is doing. Look, like just now Shark Tank has started. Our clear instructions to our team is, whoever is coming to Shark Tank,
just propose them global gardener to become global gardeners vendor. Why? Because anyways, jo log Shark Tank mein aa rahe, they need sales. They will always accept our proposal easily. So yesterday only we gave this instructions to our team. Now contact all the person, jo bhi log aaye, unko funding mile na mile, if their product is good, just onboard them on global gardener. Simple. Your vendors are around you and they will be more than happy. Yesterday I had a meeting with ONDC people and I proposed them that this is what we offer and this is what you are doing. Let's collaborate and move forward. And they were very easily accepted. They very easily accepted my proposal, right? And I talked very specific, only vendor model, very specific. That is the key. You need not to do the entire wow to your vendors. Please understand that. Next, I'm going to tell you how to find out problems of that vendor. And again, I will take you through the same video which I showed you on day one of finding facts and provoking your vendor to talk to you. Please understand, note it somewhere, salesmanship is not a job to only talk. It is more to listen, because your prospect will always tell you what is he looking forward to. Let's say मेरा आज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उस समय मुझे कोई आके ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफर करेगा, तो मैं क्या करूंगा? Would I listen to it? 99% I will not listen to it. क्योंकि मेरा प्रॉब्लम अभी मेरे पैर में है. My problem is कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है. मुझे अभी जो सोल्यूशन चाहिए, it is only for my leg. Same way it is vendor, anybody you meet, they need their immediate solution first. Then you can talk about big things. So as a vendor, what they are looking forward, how to find that, these two ads are best example. Again and again, I show this ads only. In 30 seconds, you are just taking that thing out of that vendor itself. What is his problem? And he only is telling you that problem, right? So let's see that. अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी. कौन? अरे भाई आप. अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई. आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है. आप बड़ी दुकान ले लो. अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन. अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे. पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे. इसको लगाओ, धंधा बढ़ाओ. पे भारत पे हमेशा एक के साथ एक फ्री. किसको मिला? कस्टमर. तुझे क्या मिला? गंदा. लकी साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर. टोली चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर. तुझे क्या मिला? गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग. और अब मिलेगा. आया है भारत पे. ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे. ले 0 ट्रांजैक्शन फीस. ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए. पे भारत पे. Now see, he has asked some question of which he has received an answer, and that has become his script to pitch his product, right? In both the script, he has pitched only one product, which is Bharat Pay. But the questions and the solutions were different. But in the end, product was same. Same way, you should learn the skill of asking questions. Power of communication is something which will help you to do less job with high efficiency of output. So I have also created a very small script what to talk to a vendor. And I always say, don't meet more than 3 vendors in a day. Your average vendor meet should not be more than three vendors in a day, because it will diminish your call quality. And these 3 vendors, when you go and meet, it should be these 3 vendors. I'm not saying that you should not call more than 3 vendors. I'm saying meeting. When you are meeting to a vendor, it should not be more than 3 vendors, because it will diminish your call quality. But what you should talk to them is something which you should learn.
So I have created a script. Of course you can, इसको आप local language में कर सकते हैं, इसके अराउंड एक दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. I have no issue, but I'm just giving you a very specific draft. If you say this as it is, you are going to get results. So I'll repeat this in English and Hindi both, so that the entire audience can understand this, right? Very simple script. In 30-40 seconds, you will be able to engage your vendor. If he is interested or not, he will answer you, and then what you need to do, I'll tell you, right? So the first statement you need to tell is, sir, I come from Global Garner, which is world's first organization to help vendors to generate sales at zero upfront cost. इसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूं. सर, मैं ग्लोबल गार्नर से आता हूं, जो कि वर्ल्ड की पहली ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यापारी के लिए सेल्स जनरेट करती है बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के. सिंपल. आपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया. ना आपको कैशबैक की बात करनी है, ना कुछ बात करनी है, क्योंकि उस वेंडर का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है उसकी सेल कैसे बढ़ेगी. और आपने पहली चीज बता दी कि हम वर्ल्ड की पहली ऐसी संस्था हैं, और आपने ये भी बता दिया कि हम पहले कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हाउ इज योर बिजनेस डूइंग एंड डू यू वांट टू ग्रो इट फर्दर. आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और क्या आप इसको आगे और बढ़ाना चाहते हो. लेट्स से वो मजाक मजाक में भी आपको बोल देता है, नहीं हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ाना है. स्टॉप देन एंड देयर. बोलो अच्छा आपका सब अच्छा चल रहा है तो आई थिंक देन यू डोंट नीड आवर सोल्यूशन. आवर सॉल्यूशंस आर ओनली मेंट कि जहां पे हम लोगों का बिजनेस बढ़ाते हैं. जिसको बिजनेस बढ़ाना होता है उसको ही हमारा सोल्यूशन सही रहता है. जिसका बिजनेस नहीं बढ़ाना है उसको हमारे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है. सरप्राइज हिम. जनरली यहां पे हम में से 99% लोग गलती एक ही करते हैं, दैट इज दे कीप ऑन कन्विंसिंग दैट गाय. अरे सर सुन तो लो, 5 मिनट और तो दो, 10 मिनट और तो दो, पर केवल अच्छा मैं अगली बार आ जाऊं, आप जब फ्री हो तब मैं आ जाऊं. डोंट डू इट लाइक दैट. रिमेंबर जो मैंने सबसे पहला लाइन बोला था, यू आर किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर, यू आर हब ऑफ एम्पावरमेंट. यू हैव टू गो देयर एज अ गिवर. यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ हिम. Right? So surprise him. Just close your call there and then and there and you just move out. He will be surprised, क्योंकि आज तक ऐसा सेल्समैन उसके पास नहीं आया था. आप एक झोला छाप सेल्समैन नहीं है. You are not there to steal anything from him. You are there to empower him. Right? ये 2 बार करके देखना. आप में से कई लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, but please try and do it. It has been very successful formula with me. I have done it personally. Therefore, I can tell you this works at least 80%, 90% of the time. Close your book and just move out. Okay, sir. Sorry, if you don't want to grow your business, then sorry, I think you don't need my solution. Simple. Surprise him. तब वो बोलेगा नहीं नहीं अच्छा ठीक है बताओ क्या है. And when he says बताओ क्या है, now you are hooked to that customer. Now you know that you have been generated his interest. Then you can tell him, if yes, what are the challenges that you see कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. एंड रिमेंबर when he is telling you his challenges, जैसे सलमान खान ने उससे बोला ना कि आपके दुकान में तो टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, एंड उसने क्या बोला कि भाई मुझे नया स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा. So now he is telling you his problem. Generally, when we as a salesman go to any shop, we tell him his problem, and he generally what will a person do is नहीं ये problem तो हमारा नहीं है. Right? So don't go with a script which might fail. This script will always, when you let your customer talk, you will always get points to pitch him your product. In both the ads which I showed you, the end product was Bharat Pay. But the problem in both the videos were different. But end product, whatever was pitched was Bharat Pay. Same ways, when you will listen to your vendors, when you will listen to your prospect, they will give you clue. Right? And lastly,
when he is telling you his problems or whatever he has challenges, please write them down. This will bring professionalism in your approach to that customer. It is very important. Whenever I meet someone, I always have my writing pad in front of me where I write. I have my Samsung tab. Anyone I meet, you can talk to anyone. If I'm meeting someone with the purpose of meeting and solutions or something like that, I always keep on writing. It helps me to do two things. One, the person sitting in front of me feels that I am serious about this meeting. Second, it helps me to recall all the points which I have discussed. Right? So this will make you, again, this approach will make you different from other 100% people who would have visited him. आप एक झोला छाप सेल्समैन नहीं हो, आप साबुन तेल नहीं बेच रहे हो कि आपने गए और ये पेश किया और कुछ पैसे लिए और निकल लिए. You are there to provide a solution, and you can only provide a solution once, let's say you have gone to a doctor. करेक्ट? एक डॉक्टर है जो आपके जाते ही आपको एक पुड़िया पकड़ा दे, बोले ये अच्छा आजकल तो ये बुखार चल ही रहा है, ये चलो ये दवाई खा लेना. और दूसरा डॉक्टर है जो आपसे पहले टेस्ट करवाएगा, आपको बोलेगा कि 3 दिन बाद आना, ये रिपोर्ट के साथ आना. अब आप ये मुझे बताओ, किस डॉक्टर को आप ज्यादा फीस देते हो? जो आपके जाते ही आपको दवाई दे देता है, या जो आपको 3 दिन तक टहलाता है? जो 3 दिन तक टहलाता है उसकी आप वैल्यू भी ज्यादा करते हो, उसको पैसे भी ज्यादा देते हो. रिमेंबर दिस. बिकम दैट डॉक्टर which has a process. Without process, there is nothing in life. You can never scale. Very clearly, I'm telling you again and again. Please follow a process. And once you have write down the process, sorry. Once you have written down the problems, don't jump to conclusion immediately. He will feel कि यार इनको तो पता ही था, ये मुझे वही चिपकाने आए थे, तो वो चिपका के चले गए. And I'm not talking about this with small vendors. मतलब मैं किराने वाले को समझाने के लिए ये स्कीम नहीं बता रहा हूं आपको. When you are meeting a premium vendor, जैसे आप किसी बड़े वेंडर से मिलने जाते हो ना, आपको समझ नहीं आता इसको मैं कैसे प्रपोज करूं. He wants everything in process wise. आप अच्छा, एक अप्रोच जो सेल्समैन सबसे ज्यादा गलत करते हैं, दे ऑलवेज थिंक कि मैं आज किसी के पास गया हूं तो आज ही क्लोज करके उठूंगा. इट विल नेवर हैपन. सो अगर वो सेम डे क्लोज नहीं होना है तो क्रिएट अ वाइब ऑफ दैट क्लोजिंग, क्रिएट अ ऑरा अराउंड दैट, कि जहां पे आप उसका एक कहते हैं ना ऑरा क्रिएट कर दें. क्योंकि आपको आज तो क्लोज करना नहीं है, आपका क्लोज होगा भी नहीं. 90% ऑफ द कॉल विल टेक सम टाइम टू बी, कहते हैं ना, जो क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए. सो आप उसको प्रोसेस में डाल दीजिए, जिससे वो ऐसा ना लगे कि वो क्लोजिंग प्रोसेस है, सॉरी क्लोज नहीं हुआ, वो लगेगा कि क्लोजिंग प्रोसेस में चला गया. करेक्ट? सो दिस इज हाउ you frame the entire structure. First, listen to his problem, write down his problem. Now you give solutions to that problem. Maybe 1 day after, 2 day after, or if you genuinely feel you have real solutions, please propose them. But it should not be pre-planned solution. Of course, in the end, you have to conclude everything around Global Gardener, but it should not look like that you are just putting that product in his throat, right? And again, it should be a written solution. Whenever you talk in writing, people take it as a premium product, right? Premium product or service, right? So this is my very simple script that yes, once you have done this, if you have in a right way doing this, I'm telling you, your call will go into next step, which is now that vendor will ask, acha kya hai? Okay, tell me more about your company. Then you can just start, okay, we come from Global Gardener Sales Services Limited. You can just give this brief, our awards, our investors. These are investors of this company. These are awards which has been granted to this company.
एज अ वेंडर यू ओनली नीड सेल्स, तब आप उसको पिच करना शुरू करो. At first stage you have not pitched anything, you have just asked. Now you are doing the pitching, just asking, sir आपको क्या चाहिए. तो बोलेगा यार, वो 2-3 चीजें बोलेगा, बट एंड में बोलो कि सर ये मिले तो कैसा रहे, और ये देने वाली कितनी कंपनियां आई हैं, आपको मार्केटिंग देने वाली कंपनियां आई हैं, आपको ब्रांडिंग देने वाली कंपनियां आई हैं. यू हैव ऑल दीज कंपनीज हु हैव कम टू यू, बट इट इज नो गारंटी ऑफ सेल्स. Whereas Global Garner, our main product is sales. We are not a marketing company, we are not a branding company, we are not a training company, we are not giving you any prepaid plan. We are totally a post-paid sales company, right? And our business model is where people will sell your product, and not only sales. We will give you the entire structure for free. Your digital package, your website, your mobile app, your payment gateway integration, your delivery service integration, everything you will get for free from Global Garner, and you have to only pay once the sale happens. Now you are creating his interest, right? So this should be ready made in your mind, but you have to talk about all this when you have generated interest from his side. Okay, tell me more about this company, right? Then you can tell him, sir, we have a cashback and reward system where your customer will get 2% to 100% cashback. Now he will be interested in knowing how this cashback works, how this thing works, how the how part. Now he will ask. Until unless he is not asking, please do not vomit. Please do not vomit. Most of us do this thing. The first statement that we tell to a vendor is, हम आपके कस्टमर को 100% कैशबैक देंगे, और वहीं पे पूरा कहते हैं ना, आप खत्म कर देते हो, पूरा बिजनेस मॉडल खत्म कर देते हो. बी वेरी क्लियर कि सर मैं आपको एक ऐसा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर दूंगा कि लोग अगर आपके यहाँ से सब्जी खरीद रहे हैं तो वो जाके कहीं और पे उसके रिवॉर्ड्स एनकैश कर सकते हैं. गिव हिम एन एग्जांपल कि सर जैसे फ्लिपकार्ट पे कॉइंस आप कमाते हो तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स में खर्चा कर पाते हो. जस्ट गिव हिम ऑल दीज पॉइंटर्स, राइट? एंड यू नीड नॉट टू पिच एवरी सेगमेंट ऑफ बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू हिम, because you have heard him what are his key problems, because you know his problems. Pitch him what he might be interested in. You need not to give him the entire thing, right? This is very important for all of you to understand. वो तर्कश में तीर केवल वो मारा जाता है जो उस समय जरूरत हो. ये नहीं कि हर समय सारे तीर यूं निकाल के मारिए तो एक भी नहीं लगेगा सामने. आपने देखा होगा ना तीर कैसे मारा जाता है, वन एट अ टाइम. अगर आप 5 तीर लेके एक साथ मार देंगे, वो केवल बाहुबली कर सकता है. कौन था वो जो भी बली था, राइट? वो मार सकता है, अपन नहीं मार सकते हैं. सो वी हैव टू डू इट वन एट अ टाइम, राइट? एंड नाउ द ब्रह्मास्त्र. अब ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है किसी भी छोटे वेंडर को रिक्रूट करने के लिए. अब इसके बाद भी अगर उसको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए आप उसको छोड़ देना है, अब वो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है. व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र? आप उसको सवाल पूछिए, व्हाट इफ आई गिव यू, इंस्टेड ऑफ यू पेइंग मी, आई पे यू समथिंग. Instead of you paying me commission, I pay you something. What is that? Just ask him one question. Do you have 100 customers? What do you think the vendor will say? 100% he will say yes. क्योंकि कोई भी व्यापारी आज दुकान लेके बैठा है या कोई भी व्यापार कर रहा है, उसके पास 100 कस्टमर तो होंगे, करेक्ट? अब उसको बोलो कि मैं आपको कुछ ऐसा कर सकता हूं कि आप 30 लाख रुपए साल का अर्न करोगे, और यही नहीं, आपको 1 करोड़ रुपए रेफरल इनकम भी मिल सकता है इन्हीं 100 कस्टमर से. अब वो कहेगा भाई साहब इसने कुछ तो टोपी पहनाई, ये कुछ तो अब गोली देने वाला है मुझे, अब ये कोई बड़ा पैसा मांगेगा. एंड यू टेल हिम, सर इट इज ऑल विद जीरो कॉस्ट. व्हाट डू यू थिंक? विल दिस स्टेटमेंट क्रिएट दैट कहते हैं ना वो जिज्ञासा एक जागृत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप एक वेंडर के ऊपर? आप उससे केवल ये पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे पास कितने कस्टमर हैं. अगर तुम्हारे पास 100 कस्टमर भी हैं
मैं तुमको 30 लाख रुपए साल का अर्न करवा सकता हूं, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए का रेफरल इनकम दिला सकता हूं, और ये सारा कुछ अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं तो भूल जाओ, मैं तुमसे पैसा एक भी नहीं लूंगा। व्हाट डू यू थिंक, विल वेंडर आस्क नेक्स्ट स्टेप और नॉट? ही विल श्योरली आस्क, ही विल श्योरली आस्क। वो आपसे जरूर पूछेगा, चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। नाउ यू जस्ट ओपन दैट एक्सेल विच वी हैव ऑलरेडी गिवन यू, vendor. I'll just share that and I'll just quickly take you through that Excel. I hope this calculator is with everyone. और नहीं है तो फिर वही आप अपने स्टार्टअप किट में जाके इसको निकाल सकते हैं, वहां पे भी है ये। Is my screen visible? No. कहाँ गया? Check now. Is this visible? Okay, Yes, great. sir. Okay. So now just see, as a partner, as anything in Global Garner, you must be having your own UPOS, right or wrong? And in that UPOS, you have an eligibility to make agents, right? Just make him a agent. Just make him an agent and show him this, that I am taking 0% from you. I will not. I will only charge on your sales, which is let's say 6% में मैं आपको वेंडर एनरोल करूंगा, और आपके पास 100 कस्टमर हैं। अगर मैं आपसे केवल 1 लाख रुपए की भी सेल एक्सपेक्ट करता हूं तो मुझे आप महीने का 6,000 रुपए कमीशन पे कर रहे हो। बट अब इस 6,000 रुपए के अगेंस्ट में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं वो अब आप देखो, क्योंकि यूपॉस में आपने पैसा नहीं लगाया, मैंने पैसा लगाया है, सो आई विल चार्ज 50% कमीशन एंड आई विल गिव यू 50% पार्टनरशिप, राइट? नाउ ये जो हम पूरा फॉर्मूला दिखाते हैं यूपॉस को बताते समय, वही आपको उसको दिखाना है कि अभी आप केवल राशन बेच रहे थे अपने कस्टमर्स को, अब आप ये सारी चीजें बेचिए, और जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की कोई कॉस्ट नहीं देनी है। करेक्ट? अभी तक आप केवल अपने एक आइटम पे पैसे बना रहे थे, अब आप इन सारी चीजों पे पैसे बनाइए। करेक्ट? मैं इसमें से रियल स्टेट और ये हटा देता हूं, ये 0 कर देता हूं, और लोन भी 0 कर देता हूं। करेक्ट? नाउ यू जस्ट सी, यहां पे मेरी इनकम ऑलमोस्ट कितना हो गई आफ्टर टोटल कैश इनकम फॉर वेंडर, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए वेंडर की इनकम है सिर्फ और सिर्फ 100 कस्टमर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 100 कस्टमर के ऊपर। करेक्ट? ये एक्सेल अगर आप उसको प्रॉपरली समझा ले गए, उसको जो आपको वो कमीशन दे रहा है ना, वो भी भारी देर लगना बंद हो जाएगा, जबकि वो कमीशन तो सबको ही देता है। आज अगर वो स्विगी, जोमैटो, टोमेटो कहीं पे भी रजिस्टर्ड है तो वो कुछ ना कुछ कमीशन तो दे ही रहा है दुनिया को। आप उसको बोलो कमीशन आप देने की बजाय उल्टा कमाने लगोगे ग्लोबल गार्नर से, और मैं आपको ये डिवाइस दूंगा ऐसा, बट उसको क्या होगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो कितना कमा रहा है, वो ये देखेगा कि भाई आपका आप कितना कमा रहे हो, क्योंकि 50% तो आपको भी आ रहा होगा ना, उसको आपकी कमाई से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो आपका दोनों प्रोस्पेक्टिंग पैरेलली हो गया, वो आपका वेंडर प्रोस्पेक्ट भी हो गया एंड पैरेलली ही इज आल्सो योर यूपॉस प्रोस्पेक्ट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? आप इसको भी छोटा छोटा कर दीजिए कि भाई मैं सब कुछ 0 कर देता हूं, केवल राशन का बिल पकड़ो, ये पकड़ो, एक आधा कोई आइटम पकड़ के जो उसके बिजनेस में नहीं है सब 0 कर दीजिए, स्टिल यू आर एबल टू शो हिम हाउ मच। इसको भी 0 कर दीजिए, कैशबैक इनकम को भी 0 कर दीजिए, इंस्टेंट कैशबैक को ही रखिए, तब भी वो 3 लाख रुपए आपसे 66,000 रुपीज साल का कमा रहा है, सिर्फ 100 कस्टमर के ऊपर, जिनको वो केवल ग्रोसरी सेल कर रहा है अगर 10,000 रुपए की, या कोई भी और प्रोडक्ट पकड़ लीजिए अपने हिसाब से जो जो आपको लग रहा है उस वेंडर को इजीली सेल कर सकता है वो। So use all these tools to explain him what is his benefit on his own customer base. अब उसको आपको कमीशन देना भी नहीं खलेगा, इंस्टेड वो आपसे यूपॉस भी शायद बाय कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वेंडर ऑलरेडी बिजनेस में है, he knows the power of investing, he knows power of inventory, the more inventory he will have, the more sale he will have। जैसे सलमान खान वाला ऐड कि भाई इतना स्टॉक क्यों रख रहे हो, तुम्हारी दुकान में तो जगह ही नहीं है रखने की,
तो उसने बोला भैया स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. So this will help you to engage that customer. Yes, this is right. Whatever he's saying, I have nothing to lose. I have to pay him only when he is giving me sales. I am getting free digitalization. I am getting free sales ecosystem. I am getting free reward program for my customers. जैसे कल हमने ओएनडीसी वालों को प्रपोज किया, हमने कहा आप लोग कोई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर तो दे ही नहीं रहे, लोग क्यों आएंगे? आप बोल रहे हो कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के अगेंस्ट में कस्टमर ये वेंडर्स को खड़ा कर दोगे, बट कैसे खड़ा कर दोगे? उनके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उनका कैशबैक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो डीप पॉकेट डिस्काउंट कर देते हैं. आपका कस्टमर कभी जाएगा ही नहीं आपके लोकल वेंडर्स पे. एंड दे लाइक द आइडिया, दे सेड ओके हाँ दिस इज द पॉइंट. सो दे आर गिविंग मी नाउ अ प्रपोजल कि हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं. करेक्ट. एंड फाइनली शो देम द कंपैरिजन कि भाई shopify.com क्या कर रहा है, रिलायंस स्मार्ट क्या कर रहा है, उसमें आपके कितने पैसे लग रहे हैं और ग्लोबल गार्नर में कितने पैसे लग रहे हैं. shopify.com का भी मैंने लिंक इस प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है. आप इस पे क्लिक करके जब यहाँ जाएंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना अभी. शॉपिफाई वाला स्क्रीन दिख रहा है तनिषा? नो सर. ओके एक सेकंड. ओके अब दिख रहा होगा. आप देखिए शॉपिफाई की वेबसाइट पे आप गए और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो यहाँ पे 22,680 रुपए पर मंथ पे मिल रही है. और उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज नॉट सेल्स इकोसिस्टम, इट इज जस्ट अ वेबसाइट बिल्डर. नो सेल गारंटी. आप 3 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हैं, जिस दिन आप ये 22,000 रुपए महीने का देना बंद कर देंगे उसी दिन आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी. जस्ट शो दिस टू योर वेंडर्स. और जो समझदार है वो अपने आप समझेगा आप उसको क्या दे रहे हैं. We are giving him digitalization with sales ecosystem, which is very important. No one is giving. So that is why I always say you have to go with an attitude of a giver. और वो जब तक एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा आप किसी से कुछ भी करवा नहीं सकते, कुछ भी पा नहीं सकते. राइट. सो एज अ वेंडर जब आप किसी वेंडर के पास जाएं, बी वेरी स्पेसिफिक. Don't start your entire wow. Please, please, please. वो 1 घंटे का वीडियो चालू मत कर दीजिएगा. You will confuse him also and you will put more efforts also. अगर आपको वेंडर वीडियो चालू ही करना है तो जो मैंने आपको स्टार्टअप किट में आपका एक वेंडर वीडियो दिया है, केवल 5 मिनट का है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसको प्ले कर दीजिए. उसमें बहुत ही छोटे में समझाया हुआ है कि एक वेंडर को ग्लोबल गार्नर से क्या क्या बेनिफिट हैं. और आपको अगर वर्बली बात करनी है तो सिंपल फोकस करिएगा कि केवल वेंडर के बेनिफिट की बात करें. और सबसे पहला कोशिश ये करिए कि वेंडर आपसे बात करे. ऐसे पॉइंटर्स छोड़िए जिसकी वजह से उसको आपको जवाब देना पड़ जाए. और अगर वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, डोंट बी अ झोला छाप सेल्समैन. टेल हिम सर मैं तब आऊंगा जब आपके पास समय हो. अगर वो बोलता नहीं मुझे सेल बढ़ानी ही नहीं है, ओके अगर अच्छा सेल नहीं बढ़ानी है तब तो बात ही खत्म हो गई. तब तो हमारा प्रोडक्ट आपकी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम तो सेल बढ़ाने वाला ही टूल है. हमारे पास सेल्स इकोसिस्टम है जो सेल्स बढ़ाता है. स्टॉप देन एंड देयर, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. हमारे वहां एचडीएफसी में ये लाइन बहुत बोलते थे हमको, सुबह शाम रात दिन ड्रिल करते थे. उनकी टैग लाइन ही थी रिस्पेक्ट योरसेल्फ. आप एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का देखना, वो हमको केवल एक चीज सिखाते थे, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. व्हेन यू आर गोइंग ऑन कॉल, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. डोंट बी अ झोला छाप सेल्समैन. यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ. दे यूज्ड टू मेक अस फील प्राउड ऑफ बीइंग एन एचडीएफसी एम्प्लॉय. आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योरसेल्फ. तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ की अलग अलग डेफिनेशन है. कस्टमर के लिए ये होता था कि भाई आप इंश्योरेंस बाय कर लो बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. कल बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है. एज एन एम्प्लॉय वो हमको बोलते थे कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अ कस्टमर you are there to give them solutions, not pitch a product and sell a product. Same ways in global garner I am telling you, you have to respect yourself when you are pitching global garner to someone. वेंडर बहुत सिंपल सी चीज चाहता है कि उसकी सेल बढ़े.
जिसके लिए वो आज 25% 30% कमीशन भी दे रहा है। आई टेल यू, अभी मैं 3 दिन पहले एक हमारे घर, आप लोग बल्कि उस मॉल में आए हैं, अगोरा मॉल में। जितने लोग अहमदाबाद आए होंगे कहीं ना कभी ना कभी अगोरा मॉल गए होंगे। अभी हम लेटेस्ट उनसे टाई अप करने गए जब उन्होंने नए नए ब्रांड्स खोले, तो हमने सीधा उनसे बोला, हमने कहा जोमेटो और स्विगी पे कितना दे रहे हो? उन्होंने कहा 20%। मैंने कहा मैं 15% में काम करता हूँ। नाउ वी विल बी सेलिंग देयर फ्रेंचाइज ऑल्सो, देयर थिएटर फ्रेंचाइज ऑल्सो, देयर रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज ऑल्सो, देयर क्या नाम है, होटल फ्रेंचाइज ऑल्सो। जिस होटल में आप लोग रुके थे, हम उनका बैंक्वेट भी अब सेल करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10 मिनट में कॉल खत्म हो गई। हमारे साथ कृतिका गई थी, कृतिका बोली आपने तो कुछ बात ही नहीं करी। मैंने कहा जितनी बात करी उसमें काम हो गया ना। विद इन 15 मिनट द एंटायर कॉल वॉज क्लोज्ड। उसने बोला आप प्रपोजल भेज दो, हम इसको कल परसों में साइन कर देंगे। सिंपल, बिकॉज ही इज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज एक्सपेंशन, हिज कस्टमर एक्विजिशन, दैट्स इट। अब मुझे उसको पूरा ग्लोबल गार्नर समझाना, हमने कब कंपनी शुरू करी, हमने कौन से रिवॉर्ड लिए, हमने कौन से अवार्ड लिए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। सो व्हाई डू एग्जॉस्ट माई सेल्फ इन एक्सप्लेनिंग द एंटायर स्टफ? हाँ, कभी बात होगी और वो जानना चाहेगा, आई विल ऑलवेज टेल हिम। बट एट दैट मोमेंट माई कॉल वॉज फिनिश्ड इन 15 मिनट्स। मैंने जाते ही पूछा, क्योंकि वाइल गेटिंग इनटू द मॉल आई सॉ दैट जोमेटो वाला लोगो, उसके यहाँ वो ओयो का वेडिंग वाला लोगो भी लगा था। वेडिंग के लिए भी उसने कभी ना कभी दिया होगा। मैंने कहा कितना कमीशन दिया उनको? तो बोला 20% लेते थे वो लोग। तो मैंने कहा मैं 15% में करता हूँ, खत्म करो। हार्डली 15 मिनट्स हमने उनकी कॉफी भी पी, उन्होंने बैठा के कॉफी भी पिलाई। उन्होंने बोला विकास भाई थोड़ी देर तो और बैठो। मैंने कहा नहीं, अभी चलते, बाद में देखेंगे। नाउ योर वेंडर इज आस्किंग यू टू सिट देयर। If you have a right pitch, you will always close that vendor. Why is it easy for us to close any vendor you give us? आप किसी छोटे व्यापारी के पास वो जाते हो, वो पूछता है कंपनी भाग जाएगी, कैशबैक नहीं देगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को लाते हैं, वो हमसे कोई ये सब नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी एटीट्यूड के साथ जाते हैं दैट वी आर ऑल्सो अ बिग कंपनी, वी आर देयर टू गिव। हमारा एटीट्यूड वही रहता है। Whereas when we go to a vendor, our attitude is like मालिक प्लीज किसी तरह आ जाओ, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे पैर धो के पी लेंगे। नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, बी वेरी स्क्रिप्टिव कि आपका ये स्क्रिप्ट है, अगर इसके बाहर इधर उधर कोई जा रहा है से नमस्कार। वो आपसे मस्ती लेने के लिए बोल रहा है, नहीं यार हमारा तो सेल बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे सेल की कोई जरूरत है। इमीडिएटली स्टॉप देयर। 30 सेकंड्स में आपका कॉल खत्म हो गया। बोलो सॉरी सर, वो क्या नाम है, मेरे वहां तो सेल सोल्यूशन ही हम देते हैं, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं, पानी पिलवाइए, हम चलते हैं, खत्म। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं बार बार इस पॉइंट को क्यों रिपीट कर रहा हूं? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ अ वेंडर कि तुम हमारे वेंडर बन जाओ, जबकि सब कुछ आप देने गए हो। कंपेयर योर सेल्फ, shopify.com, रिलायंस या कोई भी कंपनी, स्विगी, जोमेटो क्या कर रहे हैं और आप उनको क्या सोल्यूशन देने गए हो। उनका कस्टमर उनके पास रहता है, फिर यू कैन क्रिएट द एंटायर डेक अराउंड यू। तो पहले आपको आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। आप जाते हो सीधे, मैं आपके कस्टमर को 100% कैशबैक दे दूंगा, आप मुझे 10% कमीशन दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गया भैंस पानी में। प्लीज लर्न द स्किल टू टॉक एंड मेक द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टॉक। मोस्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर वेंडर शुड टॉक टू यू। जैसे मैंने ये अगोरा मॉल में जाते ही उससे सबसे पहले सवाल किया कि जोमेटो, स्विगी और इन सब पे कितना दे रहे हो। उसने जितना बोला उससे कम में मैंने प्रपोज कर दिया। वो मुझे क्या बोल के मना करेगा, ये बोलो। You just tell me one point where he can deny me anything, because he has already told me that he is giving commission to these guys. ये हमारे पॉइंटर्स हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, ये देखिए, मैंने आपको भी यही बोला है, ये आपके पॉइंटर्स हैं जो इन सब साइट्स पे लिस्ट है। मतलब उसने कुछ ना कुछ पैसे दे दिए हैं। ये जो इन पे है वो कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है इनको। कोई लीड के लिए दे रहा है, कोई सेल्स के लिए दे रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दे रहा है।
वो आपको मना ही नहीं कर सकता है। जाते ही बोल दीजिए सर मैंने देखा वो जस्ट डायल पे आपने अंगूठा लिया हुआ है तो कितना पैसा देना पड़ा। वो मान लो बोले 20,000 30,000 40,000, बोलो सर मैं आपको अगर सेम प्लेटफॉर्म दूं और सेल्स इकोसिस्टम दूं फ्री में तो चलेगा आपको? आप पैसे तब देना जब सेल हो जावे। हार्डली 10 सेकंड में आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई। वो हाँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा बोलेगा नहीं नहीं यार मैं तो पहले पैसा देना चाहता हूं, मुझे तो रिस्क लेने में ही मजा आता है। नो नो वड्डी। ना मैंने उसको कैशबैक बताया, ना मैंने उसको डिजिटलाइजेशन बताया, ना मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने पहला चीज सवाल पूछा जाके कि सर आपने जस्ट डायल पे रजिस्टर किया, आपने थम्स अप लिया है, इसका कितना पैसा पड़ा? वो 20 25 30,000 वो फ्री बोल ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है वो फ्री में नहीं मिलता है। माई नॉलेज एंड हिज कंफर्मेशन ऑन दैट विल क्लोज दिस डील। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसने इंडिया मार्ट में प्रीमियम लिस्टिंग ले रखी है दैट मींस ही इज हंग्री फॉर द बिजनेस। उसको आपको सिंपल ये बोलना है सर जैसे आपने इंडिया मार्ट में लिस्ट किया है, अपने आप को अलीबाबा पे लिस्ट किया है, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम आप ये करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एब्सोल्यूट सेल ला के देता हूं, उसके बाद आप मुझे कमीशन दे देना। क्या दोगे? वो 100% हाँ हाँ और हाँ ही बोलने वाला है। आज तक मुझे एक भी वेंडर ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे इस लाइन पर ना बोल दिया हो। और मैं हजारों वेंडर से मिल चुका हूं। मैं आज क्यों कॉन्फिडेंट हूं, मैं किसी भी वेंडर से मिलूंगा मैं उसको 100% कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आप सोचो ना दिमाग जैसी अच्छा अभी अभी नहीं बताना है, सॉरी, 2-3 दिन में आप लोगों को पता चलेगा हम लोगों ने कुछ नए वेंडर्स टाई अप किए हैं, राइट? बट माई ओनली सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज लर्न द स्किल ऑफ टॉकिंग। Salesmanship is nothing but what you talk in front of your prospect. With this, thank you very much. I am done with my presentation now. If you have any query related to this session, you can ask me. But it should be only limited to this session only, right? Thank you. Miss Kiran, please unmute yourself. Sorry. Vikas sir, good morning. Yeah, good morning. Sir, I have some manufacturers who manufactures garments. Yeah. So I want to make them as a vendor. So I have to recruit them as a premium vendor or normal vendor, and what I have to suggest them. Look, as a premium vendor, you can tell them that if you are giving us more commission, we are going to give more commission to our UPAS owner, and in the as a result, you will get more sales. Because let's say there are two vendors who are selling clothing, right? One is giving 10% commission and one is giving 2% commission. People will be inclined to sell 10% commission wala product. Yes. So you can always pitch him premium vendor if he agrees that it is very good, and because generally clothing people will have good margins. Yes, sir. Yes. So you can always pitch him for premium vendor. Okay, sir. So what will be the benefit in premium vendor for him? For him, first of all, he'll get more sales. Okay. And then the entire structure, whatever I have shown you, you can show it to him. Okay, and he will be also included in the GG mall thing. Yeah. Wherever he wants, that is not a problem. Okay, sir. So even the normal customers, means if it's not a premium vendor, then also he will be under GG mall. He will be Yeah, he can be. But in general, in GG mall, we always have vendors who are giving us a high ticket of commission, because their GG coins, GG shopping vouchers are also applicable and everything. Okay. Thank you, sir. Welcome. Mr. Madan Kumar, please unmute. Good morning, Vikas sir. This is Madan Kumar from Chennai. Yeah, hi. Sir, my question is regarding, like, of course, we are giving a great service, no upfront cost, but of course, we are going to collect the cost, and always the discussion with the vendor is about the margin. Okay, now I think the company, of course, as a vendor, the minimum is about 5-6%, especially that's what we are talking about.
And there are many premium segments. So this limits only with the vendors who are having, say, about 10 or 15% margin, like food or clothing or basics. Okay, but let us say an electronic, computer sales, and there are so many businesses like gold. Okay. Now I also asked the same question, but the answer which I got from Global Garner was like, we already recruited Joy Lucas and they are paying, and like why not the small vendors? But yes, challenges are challenges, sir. So we wanted to recruit those Look, people, or generally, we should whenever you neglect. I mean, I'm in this will, dilemma. it only happens when we are not pitching our product right. He is not parting his commission to us. Why? Because he's thinking that he's giving us something. You have to give him the entire calculation. That sir, if you are giving us 5%, almost 3 to 3.5% is going to the consumer only. 0.5% is going to UPOS. 0.5% is going in distribution. 0.5% is the percentage which is with the Global Garner. One thing. So Global Garner is not taking the entire pie out of the entire commission that you are paying us. One. Second, there is always a margin in gold business. Please just go on YouTube and write it like this. How goldsmith earn. Just write this. You will get thousands of video where they have a minimum margin of 18 to 15%. 18 to 15%. Correct? So, no, I'm please don't laugh on it. It is there. You No, just no, sir. No. I mean, I'm gold, really astonished whatever gold actually. you have purchased, whatever gold you have purchased, just go and look at the slip, which you have got. There will be a making charge on that, which is not less than 15% anywhere. If you are going to buy from a good brand, which is like Tanishq, they charge as high as 35%. The gold amount is only 65%. Rest is the making charge. So all these brands give us commission because they are charging heavy making charge. And forget about anything. I can give you coins also. I can give you bricks also on cashbacks. So there is absolute margin, but it is because we have not created the wow of that product to anyone. Please understand this. Until unless we are not convinced that, first of all, we need to understand his trade. That is what I said in this presentation also, no? Please understand your prospect. If you are going to meet a gold guy, understand his business model. What I love about Global Garner today is I know almost every business margin, how they earn that margin. Because I have to negotiate with them, no? So until unless I'm not aware about what are their margins, how will I negotiate? Because some time back it was for me also कि यार gold में तो कहाँ margin है 0.1%, 0.2% पे game होता है पूरा. No, go and check the slip. Whatever gold you have purchased, just go and check the slip. They will never say that it is 100% gold. First of all, the making charge is there. Starting from 15% to 35%, it can be anything, depending upon the brand to brand. So every vendor has a margin. It is you who has to take it out from him. That is the skill that you need to know, and skill will only come when you have information. So, but on the billing value only it is taken, no? So, like, because ultimately we are taking from the billing value the 10 or 15%, they're charging separately. Okay, I too agree, like of course No, they are not. Let's assume I give you an example. Let's say you have purchased a jewelry worth rupees 1 lakh rupees, right? Okay, sir. 15,000 will be making charges. Okay. You just go and check that slip, no? 1 lakh rupees jewelry, let's say if he is a local vendor, then also he must be charging 15-20%, right? Just go and check that slip. It will be 15% of that entire bill. It is not that it is of gold or something. Aapse wo total cost, he is charging you on the total cost. Let's say you are buying jewelry worth 1 lakh rupees. It is not 1 lakh. It is 15,000 making charges and rest remaining 85,000 is gold. And in gold also they are making money because it is 22 carat, 18 carat, and this carat, that carat. Because this cost, whatever cost you see in the market, it is of 24 carat. Whereas jewelries are generally made from 18 to 22%.
even the purest of the jewelry will not be beyond 22%, because then it cannot hold anything. It will be almost soft types, right? So therefore they have margins. Don't get into that trap that they don't have margins. They always have a margin. You see any jewelry businessman, he is buying new cars every year. He is buying new bungalow every year. He is expanding every year. How come they are able to do? And if you want to really understand this business, go and check the Kalyan Jewelers books. It is a limited company. You will get every information. Just read them. We are living in an era where we can get any information anywhere. Just and go to Google Baba. Google Baba knows everything. Then you can negotiate. Then you can talk to your vendors, right? Can we have any separate knowledge of these insights, like let's say, jewelers, electronic goods, because we are, I mean, anything so that it will help us to already I already be told aware. you, just go on Google. Look, there Okay. cannot be a session on it. Why? Because there are thousands and lakhs of customers, vendors. We cannot create videos because it will be boring for you. You cannot also watch all those videos, right? No, I'm not asking for any videos. I'm just putting across, any particular insight, especially where we can That go is as a what I'm ready saying. regular. No, just go on Google. Let's say you want to meet gold merchant. Just Google it. That is how I have learned the trade. I have learned it like this only. कि गोल्ड वाले का कितना मार्जिन होता है, ओके लेट्स से रेलवे टिकटिंग में कितना मार्जिन होता है, हाउ दे अर्न, हाउ पेटीएम अर्न्स, हाउ दिस अर्न्स, हाउ कल्याण ज्वेलर अर्न्स, हाउ तनिष्क अर्न्स. There are thousands of videos available. So whatever segment you are going for, just get the information. That was my first when I did the presentation. I said no, know your prospects. Whoever you are meeting, just Google about it. No, कि भाई किराना business में what are the margins? Generally people will tell you, no, किराना business has no margin, whereas there are margin as high as 30%, 40%. There are only few products like sugar, oil. There are 1 or 2 products where there is no margin, which is 1% or 2% margin. But remaining the entire catalog has a good margin. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Mr. Abhijit, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क के जब हम वेंडर से बात करते हैं जाके, ऑल प्रेजेंटेशन वाज, आई मीन ट्रेनिंग वाज रियली अमेजिंग. सो हम ये बताते हैं कि जीजी से हम आपको सेल देंगे, सो जो कस्टमर जाएगा उनके पास, ही इज द कस्टमर यूजिंग द ऐप ऑलरेडी. वो एक क्वेश्चन है सर. एंड जो ऑन ग्राउंड, सॉरी आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन. सो जो जीजी से हम बोलते हैं ना सर, आपका सेल हम इंक्रीज करेंगे करके, जो कस्टमर्स हम भेजेंगे आपके पास, वो कस्टमर्स कौन है जो ऑलरेडी जीजी ऐप यूज करते हैं, वो है या हाउ इज इट, वो एक क्वेश्चन है सर. एंड अनदर थिंग, जो ऑन ग्राउंड पे जो हम सेल्स टीम की बात कर रहे हैं, सो वो कौन रहेंगे, जस्ट ये जानना था सर. पहला आपका सवाल था कि क्या सवाल था आपका कि आप कस्टमर कौन से जाएंगे उनके पास? जी जी सर, आई मीन सेल. जो जीजी कस्टमर्स होंगे वो जाएंगे जिनको कैशबैक चाहिए. और हमें जी, दो तरीके से वेंडर यूज कर सकता है. वो हमें अपने रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की तरह यूज कर सकता है. आज उसके पास कोई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं है. मान लीजिए आप अपने घर के बगल में बाल कटवाने जा रहे हैं और उसके पास 3 बाल काटने वाली दुकानें आपके आसपास है. एक कैशबैक दे रही है और 2 नहीं दे रही है, तो आप किसमें जाओगे? जी जी सर, कैशबैक वाले में. बट ऑफ कोर्स ही बात है. सेकंड है कि सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? ऑन ग्राउंड सेल्स टीम जो है वो ऑन ग्राउंड सेल्स टीम, जो आज हमारा ये यूपॉस है, ये हमारे लिए सेल्स टीम है ना हमारा. जैसे आज हमने 15,000 यूपॉस बेचे, तो ये 15,000 यूपॉस हमसे लोगों ने क्यों खरीदे? क्योंकि वो अर्निंग करना चाहते हैं. वो अर्निंग कैसे करेंगे? जब वो सेल करेंगे वेंडर से. ओके, करेक्ट. तो जो हमारे पास ऑनबोर्डेड वेंडर होंगे वो उन्हीं का माल बेचेंगे ना. ओके, सो यूजर भी बढ़ाएंगे, वेंडर्स भी बढ़ाएंगे, सो दैट ऑटोमेटिक एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा ना. यस 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 सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. Okay, I think we are done for the day. Thank you very much. Again, I'm really happy to see 214 people were there. So really good. Good to see all of you. Keep motivating me. Last 2 days are left. Let's understand more about how to sell UPOS and how to enroll a user.
and then we will conclude on Sunday. Thank you very much. अच्छा कोई है? रुको, तमाजीत. Please unmute, sir. गुड मॉर्निंग सर. सर वेंडर स्पीचिंग अगर ग्रुप डिस्कशन सही रहेगा सर या सिंगल डिस्कशन? डिपेंड्स. अगर आपने कोई वेंडर मीट बुलाई है तब आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, बट इन द एंड यू हैव टू डू इंडिविजुअल डिस्कशन आल्सो, बिकॉज उस मीट में लेट्स से अगर आपने डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग बुलाए हैं तो उसमें प्रॉब्लम केवल यही आती है कि किसी एक को सोल्यूशन चाहिए गोल्ड का, किसी को चाहिए सब्जी का, किसी को चाहिए दवाइयों का. सो आप एक डेक पे एक सेम सोल्यूशन नहीं दे सकते हो. आप मोटा मोटा बता सकते हो, बट लास्ट का सोल्यूशन उनको कस्टमाइज करके ही आपको देना पड़ेगा. सो इट इज ऑलवेज गुड टू रिक्रूट अ वेंडर इंडिविजुअली. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Next is Mr. Ashok Kumar. Please unmute yourself. Sir, good morning. Yeah. Just wanted to have a list of all the companies with the logos, which you had earlier shared us once. Is it possible to share it again, sir? Yeah, we can share it again, but you can always search them in our Telegram group. Okay. Telegram group, everything is still there. Okay. Use Telegram as your data bank. Whatever we have announced, it is there, and whatever video, like all these videos are always going there. You can either go on Telegram, either you can go on our Facebook group. Next but is still you can Mr. ask Tanisha. Tanisha will send it to you. Miss Subhoshri, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर. या गुड सर एक्चुअली जो एक्सेल शीट में आप दिखाया वो एक्सेल शीट अभी जो वेंडर के लिए वो वेंडर इनकम के लिए वो एक्सेल शीट कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे? क्योंकि पहले कल जो आप सेशन में आप नहीं थे क्या? सॉरी सर, कल सेशन में आप थे? कल सेशन में से थोड़ा मैंने जल्दी हम निकाल गए थे. अच्छा, हम थे कोई कल, बात नहीं. लेकिन जो हमने कल आपको स्टार्टअप किट भेजी है उसमें आप जब वेंडर सेक्शन में जाएंगे वहां पे एक कैलकुलेटर का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. वेंडर में वो तो सर स्टार्टअप किट में जाकर तो देख रहे हैं, स्टार्टअप किट तो हम डाउनलोड कर लिए. यहाँ हाँ, पे एक स्टार्टअप आपका किट में आप वेंडर में जाइए, वेंडर में आपको वो एक्सेल मिल जाएगी. Okay. Next is. हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? सर उसमें तो प्री वाव प्रेजेंटेशन, पोस्ट वाव प्रेजेंटेशन. हाँ, पोस्ट वाव वाले में जाइए, पोस्ट वाव वाले में जाइए, उसके अंदर आपको मिलेगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंटेंट ऊपर पढ़िए तो भाई. ओके सर, ओके. ऐसा मत करिए, थाली सामने रखा है, चम्मच उठा के खुद ही खाना पड़ेगा. हर चीज हम ही से खिलवाएंगे. थैंक यू सर. वेलकम. Mohanty ji, please unmute. Mohanty ji, please unmute. Yeah, good morning. Hi, good morning. बहुत अच्छा लगा, और ये भी है, मैं इतना ये नहीं ले रहा हूँ. मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कहाँ पे ये मिलेगा जो स्कैन एंड पे बोल के हमारा ऐप में दिखा रहा है, उसको वेंडर्स के जगह कैसे यूज कर पाएंगे? बस वेंडर्स के डैशबोर्ड पे उनका एक क्यूआर दिया हुआ है, उसको आप वेंडर के यहाँ लगवा दीजिए, फिर आप स्कैन एंड पे यूज कर पाएंगे. तो वेंडर तभी क्या पूछ रहा है कि ये पैसा हमको कैसे आएगा? क्या वेंडर मतलब के पैनल पे आ जाएगा, वेंडर फिर इसको विड्रॉ कर सकता है. T+2 में उसके अकाउंट में आ जाएगा. इसमें हमारा इसी प्रेजेंटेशन में कुछ है क्या मैं जानने के लिए, या हम प्रैक्टिकली कुछ इसको ये करेंगे? मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको. इसमें प्रेजेंटेशन में क्या बताऊंगा मैंने बता दिया ना. आप अपने पैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर दीजिए, उनका क्यूआर उनके यहाँ लगा दीजिए, और स्कैन एंड पे वो पे कर पाएगा कस्टमर उनको. इसी का ही मेरा पूरा आज तक जो मेरा जो टेंशन था उसी में था. फिर भी मैंने आपसे हेल्प लूंगा वो आगे के लिए. थैंक यू भैया, थैंक यू. Manohan ji, please unmute yourself. Vikas ji, good morning. Hi, good morning. Vikas ji, can we have a small and a crisp presentation for the vendors also? It is already there. It is already there in your startup kit. There is a single pager also with all vendor benefits. There is a 5-minute specific video for vendors in English and Hindi both.
Yeah, but then at the same time, if we can have a PPT or something like that, if you're meeting a big vendor, someone, so it would always be better that we present him with a PPT or something. But that is what I said. No, it is already there. You can just copy the content as you want. Okay. It is already there on that startup kit. Okay. Yeah. Thank you. Okay, welcome. Mr. Mohammed, please unmute yourself. हेलो गुड मॉर्निंग विकास जी जी गुड मॉर्निंग जी मैं डॉक्टर मोहम्मद फ्रॉम केरला या बोलिए सर ये वेंडर का एप्लीकेशन का ऊपर ये की क्यूआर कोड है ये कैसा यूज कर दिया वेंडर का एप्लीकेशन है ना ये उसका ऊपर ये की क्यूआर कोड है ये कैसा यूज कर रही हो देखिए वेंडर के 2-3 क्यूआर हैं अगर आप एक देखोगे जिसमें आप स्कैन करके उसको बिल अपलोड कर सकते हो और एक में आप स्कैन एंड पे कर सकते हो सो यू कैन कनेक्ट टू अमित विल गाइड यू हाउ टू टेक्निकली यूज दैट दोनों का क्यूआर कोड है जी दोनों का क्यूआर कोड है बिल अपलोड का भी क्यूआर कोड है और स्कैन एंड पे का भी क्यूआर कोड है ओके 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 थैंक यू ओके थैंक यू सर Mr. Madan Kumar, please unmute yourself. Sir, one more question, just which is related to Mr. Manmohan, what he asked. Can we have, for example, there is a Facebook group, you know, like say Mumbai or Chennai vendors group, or you know, business group first of all. So can we have some pre-drafting prospecting draft, something like that? Of course, you know, like, you know, we have like Global Garner, this industry, and very, you know, yesterday whatever we had, this has, but we have something, you know, a pre-prospecting tool first of all, okay, or a pre-prospecting draft which we can ready-madely, you know, copy paste, and from there we get a response, and now we can, it will be easier to contact them. That's number one. Second thing, there is a WhatsApp group. You know, that's what. if you read, have you read that proposal for vendors which we have given in startup kit? No, sir. I mean, you know, like, of course, but I went through the glance. It is only on the, it's Go on a very there, bigger read scale, that. actually. Yesterday only I told you, no? You are Okay, just sir. asking for the sake of asking, but please go there and check it, what the content is written. It is same what you want. It is how you are going to approach your vendors. The script is given there. All you need to do is copy and paste and send it to anyone. If you want a video of it, that link also is there. Just click copy and send it to anyone. Both the things are there. And similarly for user also, we can have something like where we have for vendor, for user, for UPOS, for leadership. All four are given there. Okay, so you can open a document called 4 Golden Opportunities with Global Garner. In that, everything is given. Video, written content, everything is there. Got it, sir. We'll go through that, sir. Actually. Welcome. Thank you. Okay, fair enough. Good to meet all of you. We'll see you tomorrow. Thank you.